2 days after 14 Jawans of the CRPF were killed in a brazen Maoist attack in Chintagufa in Chhattisgarh, some of the injured in that attack have talked about how the Maoists had used women and children as human shields. My colleague Vishnu Shom joining us from Raipur with all the latest. 2 days after the encounter in the Chintagufa area, important details are emerging on just what went wrong. We managed to speak to a Jawan who was injured in the operations. He told us his story, and you'll see it very soon, on how he actually managed to walk more than 9 kilometers to get back to his camp despite having gunshot injuries on his leg. Well, this is the ward where some of those who survived this terrible attack in the encounter between the Naxals and the CRPF are staying. Their condition is actually getting better. We're going to speak to some of them. They've agreed to come on record to tell us of their experiences. हमारा मिशन है सर यहाँ से छत्तीसगढ़ में शांति पैदा करना, शांति में जो एक अमन चैन से जीते हैं लोग जिंदगी उसको जियाना, क्योंकि हम सर भर्ती ही इसलिए हुए हैं। आपका पेट्रोल में कितने लोग थे? हम तकरीबन सर 200 थे। अच्छा, और आप इस गांव में जा रहे थे? गांव से हम निकल चुके थे। गांव से तो गांव से फिर हमारे ऊपर अटेंडम फायर आई। कहाँ से? एक गांव है, एक बगल में टेकरी है। अच्छा। उसी टेकरी के ऊपर से जी। तो जब टेकरी के ऊपर से फायर आई तो हमने वहां देखा, हमारी जो अपनी मूवमेंट है उसको हमने देखा। उसके बाद वहां पूरे जो गांव वाले बच्चे बूढ़े चिल्लाते हुए हमारे तरफ आए। तो निहत्थों पे तो हम वार नहीं कर सकते ना, तो सर हम उन पे कुछ नहीं किया, इसी का मजबूरी का फायदा वो उठा लिए, पीछे हो गए। अच्छा, तो वो लोग आगे पीछे वो आगे पीछे तो फायरिंग जब शुरू हुआ चारों ओर से, चारों तरफ से हुई फायरिंग। तो आप लोग बीच में थे? हम लोग सर हाँ बीच में पड़ गए। तो सर फिर हम लोगों ने भी उसका मुंह तोड़ जवाब दे दिया। तो तकरीबन सर नक्सली 20-25 मारे गए। फिर आप निकल कैसे पाए? किसी फायरिंग करते हुए निकले ना सर। पेट्रोल आप खुद चल सके या किसी और? मैंने 9 किलोमीटर दूर पैदल चला हूँ गोली इंजोर्ड होने के बाद भी, क्योंकि कोई हमारे पास साधन नहीं थे उस जंगल में। Well, as you can see there, a very, very brave Jawan of the CRP describing what the situation on the ground really was. This man walked for 9 kilometers with a gunshot injury to his camp, and they kept firing while withdrawing from that area. But all around him, when this encounter was taking place, there were men who were falling. It was an extremely difficult situation, but he just described for us what a human shield implies and how in many instances of late the forces just cannot fire in the manner in which they wanted to, because there are others, innocents, children, old women, who come in between the enemy and them. In Raipur with Manvendra Gautam, Vishnu Shom for NDTV.